So we are done with till Article 30. Okay. So Article fundamental rights, Article 12 to Article 30 we are done. This is the most important provisions from prelims and mains point of view. Today we'll be covering 31 to 35. उतना important नहीं है, लेकिन you never know, prelims में आ सकता है. Prelims, for prelims it is important, एक क्वेश्चन आ सकता है, but mains के लिए उतना important नहीं है. फाइन. सो हियर आर्टिकल 31 में बेसिकली हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट. उसका प्रोविजन से विल कम टू दैट लेटर, बट पहले वी नीड टू नो अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी का इवोल्यूशन हिस्ट्री क्या है, एंड व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी. So history of right to property under the Constitution of India. The Constitution of 1949 had a threefold provision for safeguarding the right to property, private property. It not only guaranteed the right of private ownership, but also the right to enjoy and dispose of property free from restrictions other than reasonable restrictions. Right to private ownership का भी guarantee देता है, also right to enjoy and dispose of property free from restrictions other than some reasonable restrictions will always be there. Our constitution is not absolute, right? Every right comes with some or other restrictions. Okay, firstly it guaranteed to every citizen the right to acquire any property by any lawful means, ठीक है, such as inheritance, personal earning or otherwise, to hold it as his own and dispose it freely. Okay, you can hold it, you can also dispose it. Okay, any property, you can acquire it, you can dispose it. Fine. Limited only by reasonable restrictions to serve the exigencies of public welfare. Yes, but government can bring some restrictions, okay, reasonable, and that should be for public welfare or public interest. And any other restrictions that may be imposed by the state to protect the interest of any scheduled tribe. These are the two restrictions. Okay, we'll be going through the articles in detail, but first of all you should know this is the basic thing. Okay, to protect the interest of any scheduled tribes. Fine. Okay, this is one aspect. Secondly, the Constitution guaranteed that no person shall be deprived of his property save by the authority of law. ठीक है. Article 31 clause 1. See, Article 31 is not there now, but clause 1 is there. Clause 1 ये बोलता है कि no person shall be deprived of his property unless and until it is done by a law or by an act. So it can be deprived of your property if there is some provision in the law. Okay, so this is second provision or second aspect of right to property. Thirdly, the Constitution enjoined that if the state wants to acquire the private property of an individual or to requisition, that is to take over its possession for a temporary period, if the government wants to take your property or to take the possession for some period, then it could do. Yes, the state or the government can do only on two conditions. That is, the acquisition or requisition should be for a public purpose. If the government is taking, so obviously it will be for public purpose, right? The government will not take for personal use of a chief minister or a prime minister. It will be for public purpose. If suppose, for example, your property is besides a national highway or a state highway, and the government wants to enlarge it for public, any kind of public purpose, so it can do it. When such law is passed, it must provide for the payment of an amount to the owner. It's not free of cost. The government has to pay. The market value has to be paid, either by fixing the amount or by specifying the principle upon which it is to be determined. Now, this provision is mentioned in Article 31 clause 2. In the law, ठीक है, जो लॉ करेगा, जो सरकार जो लॉ करेगी, अथॉरिटी ऑफ द लॉ, इन द लॉ ओनली दे विल मेंशन कि ओके दिस मच इज द कंपेंसेशन, all those provisions or the process, everything will be mentioned. So it is up to the government. Okay, they have to pay, and this thing is mentioned in Constitution, but it has to come through a law. Clear? Fine. This is the basic thing you have to remember. Okay, fine. Now some amendments were made. Now these clauses also were not original.
Okay, these were added later on, like subsequently they were added. For example, Fourth Amendment 1955, Article Clause 2. Now we studied the Clause 2, right? Though the legislature was under a constitutional obligation to pay compensation, but the adequacy of the compensation shall not be liable to be questioned in a court of law. Okay, the legislature, yes, there is a constitutional obligation कि you have to pay compensation. Now, be very clear in the statement. What is the statement Article 31(2) says? Either by fixing the amount or by specifying the principle. It means you have to pay. But whether it is written how much to pay? No, no, not written. Whether that amount, is adequate for that person, not mentioned. So that compensation shall not be liable to be questioned in a court of law because it's not mentioned in the, it is not mentioned in the constitution. So whatever is there in the law, you have to go via that. Whatever is there in the law. So these are the loopholes you can write. Whenever a question comes, suppose a question comes, I'm just telling you the concept. Whenever a question comes, property or something, you can use your answers in a way forward. These are the things. These are the loopholes. Our constitution, our law. There are good things. There are also loopholes. That's why evolution. Our constitution is evolving. A lot of amendments are being made. Okay, looking at the dynamic times. Fine. So adequacy का हम क्वेश्चन नहीं कर सकते कोर्ट में जाके. Okay. So the adequacy of the compensation, whether it is adequate or not, sufficient or not, shall not be liable to be produced in the court of law. Okay. In other words, the person cannot go to court on the ground that a legislator had not provided the payment for the full value of the property. तो अभी बिकॉज एडिक्वेसी के बारे में लिखा नहीं है फुल वैल्यू क्या है उसका क्या, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट. इफ लॉ पे एक लॉ लाके वहां पे दे विल चेंज इट, देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट बिकॉज our thing goes by, the court thing goes by procedure established by law. I've already told you, procedure established by law. law के द्वारा जो procedure होगा आप उसी के हिसाब से जाओगे. And due process of law is not, will not applicable to here. Due process of law is only to Article 21. Okay, ठीक है. So compensation versus full compensation. Here the debate comes between, because here full compensation is not mentioned. Only it is mentioned, okay, the government will compensate, will give some amount. Whether it is full or half or 30% or 80%, no, it depends on the government. Next. However, if even after the amendment, after this amendment 1955 में fourth amendment के बाद, the Supreme Court continued to hold that the very word compensation implied full monetary equivalent of the property taken away from the owner, that is its market value at the date of the acquisition. But Supreme Court said कि the word compensation means you have to give like full monetary equivalent, but the governments are not adhering to it. Supreme Court did not order anyone to do it. Supreme Court just gave a statement. Here the compensation means, like Supreme Court clarified it, interpreted it and clarified it. Means the full amount has to be given. Okay. Now comes 25th Amendment 1971. Now the word compensation in Article 31(2) was substituted by the word amount. But the amount fixed by the legislature could not be arbitrary and must be determined by a principle. ऊपर हमने लिखा था. इस अमेंडमेंट में सरकार ने चेंज किया, the government changed it and used the word amount, and they told कि okay, we will bring a law, but the amount fixed by the law will not be arbitrary and will be fixed by determined by a principle which is relevant to the acquisition of property. Principle means depending on the market value, all those things, property sell or खरीदने में जो all those stuff रहता है, economic stuffs, it has to be determined by a principle, not arbitrary कि इतना ही दे दीजिए, नहीं. There has to be a principle for everything. Okay, next. The Indira Gandhi government, 42nd Amendment Act 1976 में they introduced certain exceptions to Article 31(1), that is 31A to 31D.
ठीक है, कुछ exceptions लाए to exclude the obligation to pay any amount or compensation. We'll go to that one by one. Very easy. Okay. Okay. Then in 1978, 44th Amendment हुआ. It eliminated the right to property altogether from the list of fundamental rights. 44th Amendment, remember, already we know it, again remember, this is very important. 44th Amendment में जो राइट टू प्रॉपर्टी अब तक था फंडामेंटल राइट में, एक पर्टिकुलर 31 का जो मेन क्लॉज है, 31(1) का जो क्लॉज है वो टोटल हटाया गया. 31(1) हैज बीन टेकन आउट. ये राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट था, वो हटाया गया, हैज बीन टेकन आउट ऑफ पार्ट 3. पार्ट 3 इज फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 इज डीपीएसपी, and a separate article 300A was introduced. ठीक है. Now 300A is not a fundamental right, it is a constitutional right. In 300A the article was no person shall be deprived of his property save by authority of law. Now only we discussed, this is what is working now. 300A, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, कोई भी आदमी उसको हम प्रॉपर्टी उसका ले नहीं सकते और सरकार उसकी ले नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन अथॉरिटी ऑफ लॉ. तो सरकार लॉ के द्वारा करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लार एक्ट 2013, लैंड एक्विजिशन एंड लार एक्ट, पुराना एक्ट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन स्टिल देन पता होना चाहिए. लैंड एक्विजिशन एक्ट अभी रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट भी हुआ था, वो भी 15-16 पे हुआ था, 15 में हुआ था. Not required now unless and until some new things happen. Okay, just remember इस एक्ट में सब मेंशन्ड है. सो अभी जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बिकॉज आर्टिकल 300A, इट इज ऑल्सो ए लीगल राइट बिकॉज लॉ में भी मेंशन है, दोनों है, बट इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट. ओके ओके. If an individual's property is taken away by a public official without legal authority or in excess of the power conferred by the law, he can no longer have speedy remedy direct from the Supreme Court under Article 32. Now fundamental right नहीं है. Now fundamental right, it is not a fundamental right, so you cannot get a remedy of Article 32. You can't go to Supreme Court because now the right under 300, if something happens, if sometimes somebody takes out your property without any legal authority or is doing some more than the power mentioned in the law, then you can't go to Supreme Court now because आपका fundamental right चला गया है, so you do not get a remedy under Article 32. You will not get. So now the right under 300A is not a fundamental right, so he shall find his remedy from the High Court under Article 226 or by an ordinary suit. Article 226 में आप जा सकते हो और by a ordinary suit. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट, though Article 31 itself has been deleted, now Article 31 itself is deleted, but 31A, which was originally inserted as an exception to 31A, has been retained. 31A है, हम 31A क्या है पढ़ेंगे. Article 31A therefore remains to operate as an exception to 14 and 19. 14 क्या है हमको पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. 19 हमको पता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो भी है उसका एक्सेप्शन. अब एक्सेप्शन क्या है मैं बताऊंगा, आगे मेंशन्ड है. Even though the Article 31 has been omitted, the right to full compensation to the actual tiller has been retained and transferred to Article 30 Clause 1. ठीक है, ये 30 नहीं है, 31 है, 31. ओके, 31A, नॉट क्लॉज 1, 31A हम पढ़ेंगे अभी, डोंट वरी. अभी आगे मैंने पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा है, वहां पे क्लैरिटी हो जाएगी. ये सब और एक बार लिखा है. Now points to be remembered. Though the citizen shall no longer have guaranteed right to compensation if his right is acquired or requisitioned by and the legislature shall have no constitutional obligation to pay for payment of any compensation to the expropriated owner, two exceptions to this general position are allowed by 44th Amendment. ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन तो रहा नहीं क्योंकि वो फंडामेंटल राइट तो चला गया. ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन इन द सेंस कि एवरीथिंग अभी लॉ के द्वारा हो रहा है. कितना पेमेंट दोगे, क्या करोगे, वो सब लॉ के द्वारा हो रहा है. अभी कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्लियर कट नहीं है ना, बस अमाउंट है. अब एग्जैक्टली फुल कंपेंसेशन दे रहे हो या क्या दे रहे हो, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. तो टू एक्सेप्शंस टू दिस जनरल पोजीशन आर अलाउड बाय द 44th अमेंडमेंट इन टू केसेस ऑफ एक्विजिशन. एक है इफ द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय ए माइनॉरिटी
The law of acquisition must provide for such compensation which should not abrogate the right of a minority. Because right of a minority is very important. Article 30. Okay. Now this right of a minority to establish and administer educational institution is Article 30. Okay. Now if you make a law under Article 300A, okay, there is a law. Now suppose a situation comes कि the government wants to acquire a minority educational institutions. Okay, acquisition करेगा, एक land acquisition करेगा. So at that point of time, you have to provide compensation, and you have to make sure, the government has to make sure it does not abrogate the right of a minority. It does not abrogate Article 30. So this one cannot supersede Article 30. Article 30 will always remain. Okay, and this is guaranteed by Article 30. That is, the state must offer full market value or adequate compensation. Here, यहाँ पे आपको full market value देना पड़ेगा और adequate compensation देना पड़ेगा. 44th amendment में ये add हुआ था. Remember. Minority की बात जब आ जाती है, no need to remember amendment name, just remember the statement. Minority की बात जब आती है and we're talking about acquisition, then you have to, you can take the land, you can acquisition आप कर सकते हो, it can be taken, acquisition can be done, but make sure it will not affect Article 30. That is the right of minority to establish and administer the institution, and the state must offer full market value and or adequate compensation. Okay, this came in 44th amendment. Next, if the state seeks to acquire the land which is personally cultivated by the owner, if there is a land which is personally cultivated by you, okay, and that land the government wants to acquire it, and such land does not exceed the statutory ceiling, this ceiling will be given by law. There will be some ceiling, right? Various प्रकार का provisions रहता है law में. And if such land does not exceed the statutory मतलब law पे जो ceiling दिया गया है, एक limit दिया गया है, जो भी होता है, does not exceed, then the state must pay to such owner full market value of his land as well as the building or structure standing there. तो यहाँ पे भी full market value देना पड़ेगा. ये 44th Amendment Act में they have added it. Okay. So as of now mostly we are done, but और एक बार Constitution से पढ़ लेंगे, एक बार read कर लेंगे ताकि clarity हो जाए. Okay, Article 31. Article 31, जैसे कि मेन फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, नो दिस इज रिपील्ड, दिस इज नॉट देयर नाउ by 44th Amendment Act 1970. We already covered. Article 31, simple 31 is not there now. Okay, but 31A is there. So right to property is a fundamental right, is not there, which is Article 31 में पहले से था. So this is repealed. Now come to Article 31A. ठीक है, Article 31A. So this they will never ask about 31 because it is already repealed. Everyone knows it. Now comes to Article 31. 31A says saving of laws providing for acquisition of estates or acquisition of estates or land, जो भी है. This article was added in the 1951 First Constitutional Amendment Act. According to this, the government can acquire the property of the people, and by doing so, the fundamental rights mentioned in 14 and 19 shall not be violated. Government can acquire by a law. Okay, government can acquire by law, and it also, this Article 31A in a way complements Article 300A. 300A भी तो वही बोलता है कि via law it can be taken, only that much. Via law it can be taken. No person shall be taken. Can be no person's land can be acquired by the government unless by a law. That is the Article 300A. But here something more. In 31A they have added. Previously it was also there because it was in the First Amendment Act. This one happened in the 44th Amendment Act, 1978. 300A was added, but this was 31A was already there. They said that the government can acquire. So it was in a way 31A was an exception to 31.
31 में बोलते ये फंडामेंटल राइट है, नहीं कर सकता, द गवर्नमेंट कैनॉट एक्वायर बिकॉज द फंडामेंटल राइट योर लैंड, दैट वाज रिपील्ड. So when it was there till 1978, till 1978, okay, 31A was acting as an exception clearly, because here it is saying it can acquire, and fundamental rights under 14 and 19 will also not be violated. So government is having a power. So काफी problems हो रही थी in interpretation because it is working as an exception. So they totally deleted this, but this one is still there. Okay, fine. Till here everyone clear? ठीक है. सो शैल नॉट बी वायोलेटेड, और ये चीज एक दो कोर्ट केसेस में भी वैलिडेट हुए. कोर्ट केसेस बस नॉट नीडेड हियर, फ्रॉम 31 to 35 कोर्ट केसेस आर नॉट नीडेड, बट स्टिल देन एक रीड कर लेंगे. इन अंबिका केस, एक केस हुआ था इन अंबिका मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ 1980, बहुत पुराना केस है. So the Supreme Court upheld the constitutionality of clause 1 of 31A on the test of basic structure. It also said that the sweep of Article 31A is wide and indubitably embraces legislation on land ceilings. Yes, legislation should be there on land ceilings. It's telling, the Supreme Court is telling, yes, it is constitutionally valid. Government can do. Equitable distribution of lands, annihilation of monopoly of ownership by imposition of ceiling, and regeneration of rural economy by diverse planning and strategies are covered by the armor of Article 31. यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स होगा बिकॉज एक सीलिंग डालेंगे, सीलिंग डालने से मोनोपोली नहीं रहेगा. एनिहिलेशन मीन्स डिस्ट्रॉइंग, तो वहां पे मोनोपोली ऑफ ओनरशिप नहीं रहेगा बिकॉज सीलिंग पुट करते हैं, तो ये सब गवर्नमेंट करेगा, एंड दैट इज अ गुड थिंग. दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो validated this clause. Similar thing happened in this Minerva Mills case also. Okay, Minerva Mills case, the Supreme Court held that the whole of Article 31 is unassailable on the basis of stare decisis, equitus that should not be allowed to be disturbed. वो सही है, it should not be disturbed. Goloknath case also, the court accepted the constitutional validity. So the Supreme Court has already validated it. It is okay. Now come to 31B. These are all exceptions. ठीक है. 31B, it was inserted in the, again, first amendment में हुआ था. इसमें क्या हुआ है? The article states that without prejudice to the generality of the provisions contained in Article 31A, none of the acts and regulations specified in the 9th schedule or on any of the provisions thereof shall be deemed to be void or ever to have become void on the ground that such act is inconsistent or takes away any of the rights conferred by any provisions of this act. तो ये बोल रहे कि विदाउट एनी प्रिजुडिस ऑफ जनरलिटी ऑफ प्रोविजंस, जो कि इस आर्टिकल पे 31A पे है, none of the acts specified in 9th schedule or regulation shall deem to be void. Okay, and notwithstanding any judgment, decree or order of any court or tribunal to the contrary, each of the said acts and regulations shall subject to the power of any competent legislature to repeal or amend it. तो यहाँ पे लेजिस्लेचर को ज्यादा पावर दिया जाता है. दीज आर ऑल, जस्ट रिमेंबर दीज आर एक्सेप्शंस. फाइनल पॉइंट इज दैट पीडीएफ एबव जो हमने पढ़ा, लेजिस्लेचर के पास पावर है. दैट्स इट, यू जस्ट रिमेंबर, उतना ही रिमेंबर करो. ओके, but 31C is important. Why I tell you? Because 31C deals with DPSP. You have to just remember 31A and 31C. That's it. For exam point of view, nothing else is required. This article says that notwithstanding anything contained in Article 13, Article 13 को छोड़ के, no law giving effect to the policy of the state towards securing principles in 39B and 39C. 39B and 39C DPSP है, जो पुअर के लिए वो करते हैं. ठीक है, विल गो इन डिटेल, विल रीड व्हेन वी स्टडी DPSP, बट जस्ट फॉर टाइमिंग रिमेंबर इट इज रिलेटेड टू DPSP. ठीक है, जो पुअर और गरीबों के लिए, जो इनइक्वालिटी कम करने के लिए काफी सारे प्रोविजंस हैं. टुवर्ड्स, इफ एनीथिंग, द नो लॉ शैल डीम टू बी वॉइड if any law is giving or is protecting the principles of Article 39B or 39C of Part 4, that is DPSP, shall deemed to be void on the ground that it is inconsistent or takes away the rights conferred by 14 or 19. Okay, it means obviously, for example, Article 13 क्या बोलता है? Article 13 बोलता है कि any law
which is inconsistent with fundamental rights, can be declared void. Okay, suppose there is a law Manrega. Manrega is a law. Okay, it gives जो भी है जो it gives that work related wage, it gives to people, to some people, not to all. Now you come and say it is, why it is giving to them, give to me also, because it is violating a right to equality. You can't say na, because this is securing the principles of 39b and c. You can't go and say. Okay, this is the thing. Okay, and that law, in this particular ground, you cannot go and ask the court. If you go to court, the court will tell you go and study article 31c and come, because some laws should be given effect to certain DPSP. Okay, and this you can write when lot of questions we have done in our mains batch, like the relation between fundamental rights and DPSP, where we cover कि both should complement each other. Can anyone tell me the doctrine name? What is the doctrine name which says कि FRs and DPSP should complement each other? Anyone? What is the doctrine name? Harmony, sir. Yes, doctrine of harmonious construction. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कि बोथ शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. और कहीं ना कहीं दिस इज अ लॉ व्हिच सेफगार्ड्स दिस. इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग, इट इज नॉट, एंड बोथ शुड नॉट, कहीं ना कहीं बोथ शुड नॉट फाइट. ओके ओके, this much is required for 31c. Now come to 31d. 31d is, this is the last of article 31. 31d, saving of laws in respect to anti-national activity. This is also not required because this article has been repealed again, not required. So just 31a and 31b, you can remember article 31a and 31b. This much if you remember, it is well and good. Answer आपका हो जाएगा. Okay. And now come to article 32. 32 is the heart and soul of the constitution. There is a mains question which I had done. If you remember, article 32 is the heart and soul of the constitution. We have to explain. Okay. Here it states the right to move. Like how this part will be enforced. Before, without article 32, fundamental rights are nothing. If article 32 is not there, fundamental rights are nothing. Obviously, there are some provisions. That provisions will only find acceptance when when they are enforced, right? Unless and until it is enforced. That is why article 32 is the heart and soul of the constitution. Okay, the right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights is guaranteed under article 32. Article 32 talks only Supreme Court. Article 226 जब पढ़ेंगे तब हाई कोर्ट भी जा सकते हो. ओके फाइन. क्लॉज 1, ये क्लॉज 1 बोलता है. क्लॉज 2, the Supreme Court shall have the power to issue directions or order or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto or certiorari, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this fundamental rights part. कोई भी राइट अगर आप जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट ये सब रिट इशू करता है. ऑल दीज मीनिंग्स नीचे है, बुक में भी है, नथिंग बिग यहाँ पे है, वेरी कॉमन. तो ये भी सब चीज हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की नहीं. क्लॉज 2 पे तो दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस.
ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत जन को ऐसा लगता है, बहुत जन को ऐसा लगता है, मतलब आई कैन गारंटी अगर क्वेश्चन आएगा जो सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के जाएंगे वो बोलेंगे ये जो 4 प्रोविजन है ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स में होता है। यस और नो? पहले से अभी अब तक आपको यही लग रहा था, 32 में है। आप सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ोगे, एक एक लाइन बाय लाइन आर्टिकल, वहां पे एक चीज इनके बारे में लिखा नहीं है। इट इज हियर, आर्टिकल 32 क्लॉज 2। ओके फाइन। Without prejudice, third, without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clause 1 and 2, again, very important point, Parliament may by law empower कर सकता है to any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers established by Supreme Court under clause 2. So clause 2 में Supreme Court has power to issue these writs. Okay. Clause 3 is an exception कि without giving a problem to here, Parliament also has the power to empower any other court to issue these writs. Issue these writs. किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पावर से। 32 क्लॉज 3। ओके, ऑल और एनी ऑफ दिस, ऑल और एनी, रिमेंबर ऑल और एनी, ठीक है। ओके, फिर क्लॉज 4, क्लॉज 4 जो है, द राइट गारंटेड बाय दिस आर्टिकल, ये जो आर्टिकल राइट गारंटी करता है, shall not be suspended except as otherwise provided for this constitution. ये सस्पेंड नहीं होगा except as otherwise provided for by this constitution. तो ये सस्पेंड तभी होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेगा, इमरजेंसी में प्रोवाइड करता है, अदरवाइज सस्पेंड नहीं होगा। तो लॉ से सस्पेंड नहीं हो सकता, रिमेंबर, बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट बाय लॉ। हर जगह यूज होता है ना, अदरवाइज बाय लॉ अगर हो सकता है तो ठीक है, लेकिन नॉट बाय लॉ। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे लिखा होगा कि सस्पेंड होगा, देन इट कैन बी सस्पेंडेड, except as otherwise provided by the constitution, not by the law. Parliament has no power to suspend article 32 unless and until there is another constitutional provision to suspend it. To suspend. Now I'll tell you one thing. Suppose here the question is by this constitution. Suppose, just think, someday some government amend the constitution, ठीक है, amend the constitution in any some emergency articles or anywhere, here they can amend also, they can add a clause 5 and write here कि parliament has the power, or they say they will put some provision where they will have the power, law. तो कहीं ना कहीं लिंक हो सकता है, बिकॉज इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कौन करेगा एट द एंड ऑफ द डे? पार्लियामेंट ही करेगा ना। सो जस्ट फोकस ऑन द वोकेबलरी कि एग्जाम पे, खास करके यूपीएससी एग्जाम की बात कर रहा हूं, वहां पे लिखा क्या है। ओके, थोड़ा अपना जो आईक्यू है उस आईक्यू को थोड़ा तेज करो। कॉन्स्टिट्यूशन को एट द एंड ऑफ द डे चेंज कौन करेगा? सरकार ही तो करती है। हो सकता है, मतलब देयर इज ए पॉसिबिलिटी, ओके, बट एज ऑफ नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा है तो कर सकता है, लॉ से नहीं हो सकता। ओके, सो 32 provides adequate safeguard against the violations of fundamental rights by executive or the legislature.
So Ambedkar regarded 32 as the most important article of the constitution, without which the constitution would be a nullity. मतलब constitution का कोई फायदा ही नहीं है अगर 32 is not there. In his word, it is the very heart and soul of the constitution. Okay, fine. The powers conferred to the Supreme Court by 32 is only for the enforcement of fundamental rights. ये सिर्फ 32 में जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. लेकिन जो आर्टिकल 226 हाई कोर्ट है वो लीगल राइट्स के लिए भी है. ठीक है, बट 32 में जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ओके, कुछ प्रिंसिपल्स है रिगार्डिंग आर्टिकल 32. यू कैन रिमेंबर फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव इफ दे आस्क some judicial pronouncements regarding, and out of this one has been mentioned in Yojana last year. Current affairs पे मैंने किया था. If you remember, anyone who remembers it, if you remember not last year, this October, September, August, September में मैंने पढ़ाया था epistolary jurisdiction. It was mentioned in Yojana. Okay. Recently also mains में you can value add your answer. You can value add your answer by using this. It is the use of article 142 सुप्रीम कोर्ट का. I usually हिंदी में कॉल इट ब्रह्मास्त्र पावर. ठीक है, ब्रह्मास्त्र पावर होता है सुप्रीम कोर्ट का. एक सुप्रीम कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कुछ भी नया इनोवेटिव चीज कर सकती है. दैट इज कॉल्ड एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन. राइट, अभी आप क्योंकि टू गिव जस्टिस, टू गिव फुल जस्टिस, इट कैन पुट लाइक सुप्रीम कोर्ट कैन से यू कैन टेलीग्राम मी, यू कैन email me, I'll take your PIL. No need to come here because it's for the poor people. Poor people from a rural area can't come to Supreme Court in Delhi, right? So in that sense, epistolary jurisdiction is a very new, not new thing nowadays. It's in news. Okay. Article 42, 142 we have covered in Supreme Court chapter. You can check towards the last of the video. You can check Supreme Court in Supreme Court YouTube video. You can check. ठीक है, प्लेलिस्ट में है. ओके, सो फर्स्ट इज रेस जुडिकाटा. ये जरूरी नहीं है बट विल रीड इट. बट एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन जरूरी है. ओके, सो इन द दरियो केस 1961, काफी पुराना केस है. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ द मैटर हैज बीन एडजुडिकेटेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, then it should not be agitated again. No need to remember this name. This is judicial name. Law optional के लिए हो सकता है, हमारे लिए तो नहीं है. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ द मैटर हैड बीन एडजुडिकेटेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, एक बार अगर हो चुका है तो उसके बाद दोबारा नहीं होना चाहिए. रेस जुडिकेटा विल अप्लाई ओनली व्हेन द मैटर वाज डिसाइडेड ऑन मेरिट्स. इफ द डिसीजन हैज बीन गिवन ऑन मेरिट्स, गिवन नॉट ऑन मेरिट्स बट अदरवाइज, देन हिज डिसीजन विल नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकेट. नो नीड टू रिमेंबर ऑल दिस. ठीक है, ये सब बिल्कुल एग्जाम पे नहीं आता अनलेस एंड अनटिल यू आर फ्रॉम जुडिशियल बैकग्राउंड और गिविंग सम जुडिशियरी एग्जाम्स. नॉट रिक्वायर्ड. ओके, एटलीस्ट फॉर प्रीलिम्स आई कैन बेट. सो नो नीड टू वेस्ट टाइम हियर. विल कम टू हियर बिकॉज इट इज इन न्यूज. एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन, एक्टिंग ऑन लेटर्स रिटन. Acting, the Supreme Court acting on letters written by or on behalf of the oppressed people, poor people, oppressed people, is a strategy adopted by the Supreme Court for facilitating access to justice. This is known as epistolary jurisdiction. The letters have been converted into writ petitions on the logic that Article 32 of the Constitution does not say as to who shall have the right to move Supreme Court. लिखा है क्या Article 32 में? Who कौन जाएगा, कौन मूव करेगा, लिखा नहीं है. Nor does it say by what proceedings, कैसे जाओगे, वो भी नहीं लिखा है. ठीक है, तो यूजुअली सरकार गवर्नमेंट यूज करती है अपना, गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट अपना आर्टिकल 145 यूज 142 यूज करते हैं. ये क्वेश्चन भी मैंने बनाया था. यू कैन चेक, यू कैन जस्ट टाइप इन माय टेलीग्राम चैनल एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन. आई हैव मेंशनड इन, आई हैव गिवन द नोट्स. ओके, यू कैन चेक. इसी को सर्च करके आप देख सकते हो. तो 32 में तो ये नहीं लिखा है कि हु शैल हैव द राइट, नॉर डज इट से बाय व्हाट प्रोसीडिंग्स. तो लेटर्स जो आता है, कंप्लेंट जो आता है ऑन बिहाफ ऑफ द ऑप्रेस्ड पीपल, उसको हम रिट पिटिशन में कवर कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, बिकॉज कुछ लिखा नहीं है. नथिंग इज मेंशन्ड इन 32. Appropriate proceedings refers to the purpose of
enforcing fundamental rights are not to the form how the court has been approached. कैसे कोर्ट आए हो वो जरूरी नहीं है. हमारा मेन मकसद ये है और मेन मोटो ये टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स. हाउ द थिंग्स आर कमिंग, हाउ द पिटिशन इज कमिंग, that is not much important. Justice is much important now. The expression appropriate proceedings is too wide, and so moving the court through a letter can be appropriate proceeding, because it would not be right to expect a person acting pro bono publico to bear expenses. जो poor लोग होते हैं, it's not possible to bear expenses, वो कर नहीं सकते from his pocket for having a regular writ petition prepared by a lawyer. ठीक है, तो ये केस है, केस का नाम जरूरी नहीं है. बस रिमेंबर द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन, बिकॉज आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग इट इज इन न्यूज, इट विल हेल्प यू बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेंस वैल्यू एडिशन. ठीक है, नाउ रिमेंबर, अगर क्वेश्चन आएगा, मैंने क्वेश्चन फ्रेम भी किया था, यू कैन चेक कि एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का होता है, इट इज एक्सरसाइज्ड थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल. इट्स नॉट 32. 32 is an example. It can be enforcement of fundamental rights, it can be enforcement of any other constitutional rights or legal rights, anything. Here we are talking about Article 32. That is why we are giving example of Article 32 under this epistolary jurisdiction. ठीक है, this jurisdiction is of Supreme Court. It comes under Article 142. Okay. Fine. Next. आंसर GS2 के आंसर्स में सुप्रीम कोर्ट में जब आएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या एक्स्ट्रा करे, इनोवेटिव आंसर लिखो, ये सब चीज इफ यू राइट ओनली यू विल गेट द मार्क्स. ओके, एट द एंड ऑफ द डे इट इज द मेंस व्हिच विल फेच यू मार्क्स, इट्स नॉट प्रीलिम्स. ओके, ये सब चीज हमेशा रेडीमेड, यू हैव टू, दीज आर द पॉइंट्स व्हिच हैव टू बी रेडीमेड इन योर माइंड. सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट आएगा मतलब यू हैव सडनली आपका वो कनेक्ट होना चाहिए. ओके, आई विल राइट दिस एंड आई विल गेट दैट मार्क्स, बिकॉज हर आदमी ये सब चीज नहीं लिख पाता है. दे विल राइट वेरी कॉमन आंसर्स, कॉमन आंसर कॉमन मार्क्स, थोड़ा बेटर आंसर अदर देन अदर, यू विल गेट अ बेटर मार्क. ओके, फाइन. डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस, ये भी उतना जरूरी नहीं लेकिन हम कर सकते हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस, इट इज एक केस हुआ था 1970 में. सुप्रीम कोर्ट सेट that there can be no upper or lower limit of time for filing petition. कोई upper or lower time नहीं है for filing petition, in particular of Article 32. But inordinate delay will not be condoned by the court unless and until there is a sufficient reason for delay. मतलब पूरा का पूरा डिले करोगे वैसा नहीं है, लेकिन एक कोई लिमिट नहीं है. ओके, अगर क्वेश्चन आएगा कि 32 फाइल करने के लिए यू हैव 30 days लिमिट, और कुछ लिमिट नहीं है, क्लियर कट नहीं है. लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू रिट प्रोसीडिंग्स. एक लिमिटेशन एक्ट है, जरूरी नहीं है वो जानना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो रिट प्रोसीडिंग्स को नहीं आता है. ओके, रूल ऑफ लोकस स्टैंडी और स्टैंडाई, जैसे भी आप इसको बोल सकते हो. जनरली इफ योर राइट इज इन्फ्रिंज्ड, इफ योर राइट मतलब योर फंडामेंटल राइट इज इन्फ्रिंज्ड एंड यू आर अग्रीव्ड, ओके, देन यू विल गो टू कोर्ट, फाइन. But in Article 32, the rule is different, and especially in habeas corpus petition, that even a friend or a relative could file a case. Habeas corpus मतलब क्या? Habeas corpus मतलब अगर आपको अरेस्ट होता है तो आपको पेशी करना पड़ेगा, आप नहीं करते हो तो habeas corpus petition हो सकता है. तो उस सेंस में आपका फ्रेंड और आपका रिलेटिव भी फाइल कर सकता है. फर्दर इन केस ऑफ ए PIL, पब्लिक इंटरेस्ट जो PIL हम फाइल करते हैं, इवन ए पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन हुज राइट इज नॉट इन्फ्रिंज्ड, ही आल्सो कैन फाइल ए केस. एंड ऑन दिस पॉइंट SP गुप्ता केस में इज अ वेरी फेमस केस. इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड द टर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट, रिमेंबर, ठीक है, डिफाइंड द टर्म. फिर एक और एक केस हुआ था, प्रेमचंद्र मिश्रा केस 2008 में. सुप्रीम कोर्ट मेड एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग PILs and stated that courts are flooded with large number of PILs, so it is desirable for courts to filter out frivolous petitions and dismiss them with cost, because आज के डेट में बहुत सारे कुछ कुछ छोटी मोटी चीज का PIL भेज देते हैं. So अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि now there are lot of PILs, so it is better to जो जरूरी है हम उसको ही एक्सेप्ट करेंगे, will not entertain each and every PIL. Okay, so just remember PIL मतलब एक कोई भी आपस में मिलके किसी के बिहाफ में भी वी कैन फाइल अ PIL. इट्स नॉट कि जिसका ही राइट इन्फ्रिंज हुआ है ही विल बी द पर्सन टू फाइल, ही मे फाइल और अदर पर्सन बिहाफ ऑफ हिम आल्सो कैन फाइल. ओके, सो रिट्स का ये वेरी कॉमन चीज है, लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से लिखा है, सेम चीज लिखा है और एक बार रीड कर लेते हैं. हेबियस कॉर्पस रिट, you may have your own body. It means a demand to produce the body.
बॉडी मतलब यहाँ पे डेड बॉडी की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल जो पर्सन है यहाँ पे। द इशुएंस ऑफ रिट मीन्स एन ऑर्डर टू द डिटेनिंग अथॉरिटी, जिसने आपको डिटेन किया है, द अथॉरिटी हु हैज डिटेन्ड यू और पर्सन, टू फिजिकली प्रेजेंट द डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट। यू हैव टू, आपको कोर्ट पे नहीं करते हो तो यू विल गेट दिस, एक रिट पिटिशन आ जाएगा। एंड शो द कॉज ऑफ डिटेंशन सो दैट द कोर्ट कैन डिटरमिन इट्स लीगलिटी। कोर्ट डिटरमिन करेगा और ट्रायल, कोर्ट विल स्टार्ट द ट्रायल, और कितना लीगल है जो केस हुआ है उस हिसाब से कार्रवाई शुरू होगी। If found illegal, the detained person is set free forthwith. अगर illegal found किया गया है, the detained person is set for free, set free. अगर कुछ legality नहीं है तो उसी वक्त फ्री हो जाएगा। It may be addressed to state or a private person. ठीक है, अगर किसी ने illegally detain किया है किसी को, purpose of this is to ensure that a person is not deprived of his liberty except in accordance विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर लॉ पे है तो फिर एवरीथिंग इज ओके बिकॉज लीगल है। विदाउट लॉ अगर किसी को आप उसके लिबर्टी को हैम्पर करते हो, इसको इलीगली डिटेन करते हो, तो ये हो सकता है, हेबियस कॉर्पस हो सकता है। मैंडेमस, मैंडेमस मीन्स द ऑर्डर, मतलब इट इज कमांड टू एक्ट लॉफुली, डू योर ड्यूटी, डू योर ड्यूटी लॉफुली, टू एक्ट लॉफुली एंड टू डिसिस्ट फ्रॉम परपिट्रेटिंग एन अनलॉफुल एक्ट। It is addressed against an authority, government authority, officers, government or judicial bodies also that falls or refuses to perform a duty, अपने सही से अपना काम नहीं करते हैं तो perform a duty, and also if they do not discharge the legal obligation, फिर mandamus order हो सकता है। But it does not lie against president and governor, तो ये exception है। mandamus does not lie against president and governor, does not, ठीक है। डू योर ड्यूटी, मैंडेमस। नेक्स्ट, मैक्स टू मैक्स, ये जो क्वेश्चन है ये मैच द फॉलोइंग में आएंगे और ज्यादा स्कोप नहीं है इनका। प्रोहिबिशन, टू प्रोहिबिट, पी फॉर प्रोहिबिशन, टू प्रोहिबिट, इट इज इशूड। ये इशू कौन करता है? हायर कोर्ट करता है, टू लोअर कोर्ट को करता है, और कोई ट्राइब्यूनल को करता है, और कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस कमीशन, इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है, तो उनको करता है। इट इज इंटेंडेड टू प्रोहिबिट द कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। कभी भी अगर हायर कोर्ट को लगेगा, हायर कोर्ट कैन बी एनीथिंग, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, ठीक है, हाई कोर्ट भी हो सकता है। हायर कोर्ट किसके लिए? उसके लोअर कोर्ट के लिए हाई कोर्ट भी हायर कोर्ट हो सकता है। सो एनी हायर कोर्ट को अगर ऐसा लग रहा है कि द लोअर कोर्ट is doing its work exceeding its judiciary, अपने jurisdiction से ज्यादा आके, but it is going beyond its jurisdiction, then it can prohibit, ठीक है। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे लोग नहीं है, प्राइवेट नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको याद करना है प्रोहिबिट। हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल को देगा कि टू प्रोहिबिट फ्रॉम एक्सीडिंग द जुरिस्डिक्शन। अगर आप जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर रहे हो तो एक वो फाइल हो जाएगा। फिर सर्टियोररी, सर्टियोररी मतलब टू सर्टिफाई, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, इट ऑल्सो लाइज अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटीज। इट मीन्स टू बी इन्फॉर्म्ड। सपोज इफ ए ट्राइब्यूनल, ठीक है, जुडिशियल बॉडी है ट्राइब्यूनल, इफ ए ट्राइब्यूनल एक्ट्स विदाउट जुरिस्डिक्शन और इन एक्सेस ऑफ इट, ठीक है, एक्ट किया, ठीक है, एंड इश्यूज एन इलीगल ऑर्डर, इश्यू भी करता था। दिस इज द डिफरेंस प्रोहिबिशन और सर्टियोररी में। सर्टियोररी में क्या होता है, उसको प्रोहिबिट करता है फ्रॉम सिर्फ एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। यहां पे वो एक्सीड भी करता है विदाउट जुरिस्डिक्शन, एक्सेस भी काम करता है, एंड इशू भी कर लेता है, इलीगल ऑर्डर आल्सो इश्यूज इट, देन दैट ऑर्डर कैन बी क्वॉश्ड बाय दिस रिट, बाय सर्टियोररी, दैट कैन बी क्वॉश्ड। दिस इज द कीवर्ड हियर। While prohibition is same thing, but it is in early stage, because here it is only exceeding its jurisdiction. यहाँ पे order is not given. Once you exceed the jurisdiction, obviously after the trial only will the jurisdiction giving an order is the last thing, right? So same, so prohibition is available at an earlier stage, certiorari is available at a later stage, but on similar grounds. यही difference है, earlier and later, okay? को वारंटो मतलब what is your authority? So here it means it is a question asking with what authority or with what warrant. It clarifies in public interest the legal position
in regard to claim of a person to hold office. What is your authority? आपका ऑफिस सही है या नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट में पूछता है. Legally this position is correct, you are holding a public office correctly or not, quo warranto. ठीक है. नाउ कम टू आर्टिकल 35. वेरी इजी. आर्टिकल 35 बस एक दो पॉइंट्स आपको याद करना पड़ेगा. पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस एक्सेट्रा, आर्म्ड फोर्सेस. सो यहाँ पे पार्लियामेंट क्या करता है? पार्लियामेंट में बाय लॉ, वर्ड बाय वर्ड, हाँ, में एक लॉ पास करके, में बाय लॉ डिटरमिन टू व्हाट एक्सटेंट, दिस इज द टर्म, हाँ, एक्सटेंट, any of the rights conferred by this part shall apply to the members of the armed force. So parliament के पास पावर है कि कितना fundamental rights armed forces के लिए applicable होगा, to what extent. So the power is with the parliament. Armed forces, how much fundamental rights will be given to them, because they are sensitive thing, right? Because उनको थोड़ा, because security के लिए काम करते हैं, they work for the security of our country, थोड़ा बहुत तो उनको मिलेगा. So but the power is with the parliament. So constitution has given, article 33 constitution given the power to the parliament to decide the extent of what fundamental rights should be applicable to armed forces, the members of forces charged with maintenance of public order, persons employed in any bureau or any organization established by the state for the purposes of intelligence or counter intelligence. So here recently news was there is a NTRO का न्यूज है, IB का न्यूज है, ठीक है. So the members of IB, RAW, NTRO, they do not possess all fundamental rights. They can't. Parliament has made specified laws for them. I exactly don't remember the law. It was there in news. You can find it out. Intelligence, some bracket में, and some laws is there created by the parliament. There they have कि you can't simply freedom of speech you do not have. IB, once you go into IB, once you go into RAW, you do not have freedom of speech. There are rules which is clearly done by the parliament. You have to adhere to that. If you want to write a book, you have to take permission from IB. If you want to act in a movie, you have to take permission from the IB. So fundamental rights are not there. Okay, and this all comes from article 33. Okay, persons employed in or in connection with the telecommunication systems set up for the purposes of any force, bureau or organization referred to in clause A to C be restricted. ठीक है, telecommunication systems be restrict हो सकता है, be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and maintenance of discipline among them. You cannot have your own ID also. Like जितना मुझे पता है, like if you use also, you will be using in some other account. Okay, like Facebook हो गया, Instagram हो गया. Exactly तो मुझे पता नहीं, लेकिन Parliament has some, like there are some laws for IB people, for RAW people and any other force. There are some laws. You can't simply, you do not have your fundamental rights, all fundamental rights. They are very restricted, very much restricted. Okay. So this article 33 provides an exception to fundamental rights to some people from armed forces, people from any forces which are maintaining the public order, people from IB or any organization established by the state for purposes of intelligence or counter intelligence. Okay. So article 33 provides an exception to the fundamental rights. Yes, it is an exception, but not to all, to specific people. See the people, okay, do not go for any other people. It is clearly mentioned, armed forces, forces with maintenance of public order, and any person or any organization or bureau which deals with intelligence and counter intelligence. These are the terms. इससे बाहर का term अगर आएगा वो गलत है. Clearly mentioned in the constitution. There are certain arms of executive where freedom has to be controlled, right? Freedom control करना पड़ेगा ना, because otherwise if everything because these are sensitive organization, you can't give them everything. Okay, you can't give them everything. Okay, so finally article 34.
Article 34 are the restriction on rights conferred by this part while martial law is enforced in any area. अगर martial law लागू होता है, if there is a martial law in place, then restriction. What about restriction of fundamental rights at that particular time when martial law is there and in that area, obviously. So here what are the provisions? Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part, that is fundamental, Parliament, again the power is with Parliament may by law indemnify any person in the service of the union or the state or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force, or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered, or other act done under martial law in such area. तो अगेन पावर किसके पास है? जस्ट रिमेंबर पार्लियामेंट, आर्टिकल 34 पार्लियामेंट लॉ करेगा. वैसे तो मार्शल लॉ हमारा कभी लागू हुआ नहीं है, सो नॉट रिक्वायर्ड, बट यू शुड नो पार्लियामेंट के पास पावर है. ओनली दिस इज द टर्म यू हैव टू रिमेंबर. ये चीज याद करोगे, रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स 34 मतलब जब मार्शल लॉ होता है और पार्लियामेंट के पास पावर है. दैट्स इट. एक्सक्यूज मी सर. यस सर आर्टिकल 34 में इसका मतलब ये है कि whenever the martial law is in the operation in the country, so parliament, only the parliament in India has a power to restrict them, na? Yes, only the to restrict them, but the problem यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मार्शल लॉ भी हमारा डिफाइन नहीं हुआ है कभी. ओके, दैट इज द प्रॉब्लम हियर. लिखा तो है, ठीक है, आर्टिकल 34 लिख दिया कि पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिख दिया, चलो पार्लियामेंट के मे बाय लॉ इंडेमनिफाई एनी पर्सन, ठीक है. जब मार्शल लॉ, जहां पे मार्शल लॉ फोर्स पे है, लेकिन द पॉइंट इज मार्शल लॉ होगा कैसे? मार्शल लॉ भी तो डिफाइन नहीं है. ओके सर. Nowhere defined. So Article 34 contemplates a situation where martial law has been declared in a particular area. ये तब पार्लियामेंट तभी लॉ पास कर सकती है जब वेयर मार्शल लॉ वाज इन फोर्स, वाज तो पहले मार्शल लॉ फोर्स पे है, तब पार्लियामेंट अपने लॉ पे पास कर सकती है. आर्टिकल 34 ये बोलता है. द पॉइंट इज, अब मार्शल लॉ भी तो डिफाइन नहीं है, तो कैसे होगा? यस सर. सो दैट इज द एम्बिग्विटी. That is the ambiguity, because 34 says कि after it has been declared, but it is martial law nowhere has been declared. So कुछ ये कभी होगा ही नहीं. It's not possible now unless and until some grave situation happens. Okay sir. लेकिन हाँ, but it is understood as military law, but exact martial law तो mention है, लेकिन इसका understood as military law, जो ये होना भी बड़ा मुश्किल है. Okay sir. Okay, now come to sir, there is Upsc, which is Upsc. So is it relatable to the Upsc? Because in Upsc there is a certain immunities given to the this Upsc is this one, na? Okay. ठीक है. आर्टिकल 33 दैट इज ओके सर. रेस्ट्रिक्ट करता है, उनको भी पावर दिया था. तो आर्म्ड फोर्सेस, उनको कुछ पावर दिया जाता है, उनको कुछ रेस्ट्रिक्ट भी करते हैं, कुछ पावर भी दिया जाता है. इस एक्ट तो बहुत ही बड़ा एक्ट है. ओके, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो पार्लियामेंट के पावर थोड़ा ज्यादा हो रहा है. अगर हम आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 34 तक पहुंच गए हैं, कहीं ना कहीं हम देखेंगे 95% पार्लियामेंट का एक रहता है. Obviously, it is subject to judicial interpretations, or judicial will check whether it is correct or not. But still, then if you go via the constitution, it is a parliament. Okay, वैसे abstract important है, current affair में है. Okay, fine. Article 35 again यहाँ पे भी वही है. Legislation to give effect to the provisions of this part. Notwithstanding anything in this constitution, Parliament shall have, and the legislature will not have the power to make laws. Parliament shall have, तो legislature के साथ कुछ लेना देना यहाँ पे है ही नहीं. So it is the Parliament shall have power to make laws with respect to any of the matters under which clause 3 of 16, article 16 already done, clause 3 of article 32, 33, 34 may be provided for by law made by the Parliament. So Parliament सब पावर उसके पास रहता ही रहता है. Parliament will have the power. Anything अगर तुमको लगेगा कंफ्यूजन, वहां पे लिखा है पार्लियामेंट के पास पावर है. यस, देयर है. पार्लियामेंट कुछ भी प्रोविजन ला सकती है ये with respect to any matter. तो पार्लियामेंट ऑल्सो, पॉइंट नंबर बी, तो पार्लियामेंट कैन ऑल्सो
prescribe for punishment for those acts which are declared to be offensive under this act. Can prescribe. Example, untouchability क्या है? Untouchability पार्लियामेंट ने offenses 1955 का untouchability act में लेके आ गए. Parliament has the power. वो वहां पे भी था, यहाँ पे भी है. Parliament shall soon, as soon as maybe after the commencement of this constitution, make laws for prescribing punishment for the acts referred to in subclause 2. तो पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट को और अच्छे से बनाने के लिए एक लॉ लाके उस लॉ पे ऑफेंसेस डाल सकती है. बिकॉज इफ you see clearly article 32 to article 35, all these articles has very good provisions, but offenses mentioned नहीं है ज्यादा कि इतना साल की सजा होना चाहिए, 10 साल की होना चाहिए, इसका ट्रायल होना चाहिए. Those things are not mentioned, so that the parliament can bring a law and do it. They can bring a law. The parliament can bring on prescribe the punishment for those acts. ठीक है? This is not required. So इतना ही याद करो. Okay? It is stipulated that in this article, for the enforcement of fundamental rights, Parliament has been given exclusive power to make laws, but state legislature does not. Obviously, how can state legislature do something with fundamental rights? Fundamental rights is a part of Constitution. Constitutional amendment can only be done by central government or the Parliament. Simple. Okay. So we are done with this fundamental rights. बहुत ही अच्छे से हमने कवर किया, एक एक चीज लाइन बाय लाइन we have covered. So now it's your duty to cover MCQs as much as possible. One thing. Second thing is revision. Better if you have done more than 3 times of Lakshmikant, 3 to 4 times, then you can directly revise MCQs. Directly revise MCQs. Basically the MCQ's explanation, revise it. The more you revise the explanation, the more IQ you will develop of polity, because 18 to 20 questions is polity. You can't leave polity for prelims. You can't. ठीक है? और polity एक ऐसा subject है जो कि you will attend each and every question. You can't leave and come, because nothing will come from outside. It will be very tricky, but nothing will come from outside like a history, like a environment, or like a general science, or like a any subject you can take. But polity is the only subject which will come from inside, but it will be 50% difficult. So MCQs revise करो, जितना revise करोगे उतना अच्छा है. Okay, fine. Thank you. Good night.